नाना तीर्थ सहस्राणि नाना देव गणेशः नाना मुनि समायुक्तम तस्मत् काशी पुरातनी. One of the most beautiful facets of Kashi is that you never know what are you going to walk into. Right now we are sitting in the heart of the Kashi, which is known as the Avimukta Kshetra of Kashi, in the Vishweshwar Khand, which resides on the Trishul of Bhagwan Kashi Vishwanath. And some of the most hidden gems, some of the most lively aspects of Kashi are still visible. As you can hear right now, the chants of Vedic mantras going on in Vedic Gurukul. The entire place is charged up and is extremely lively. Today in this video, we are going to show you some of the most hidden facets of Kashi, which will include a coop where if your shadow is not visible, your death is nearing. One of the Dash Mahavidyas, one of the most sacred Shivlings of Kashi in Vidyeshwar Mahadev, which has been consecrated by Vidyadhara Rishi. And last but not the least, a temple which is even more ancient than the presence of Ma Ganga. Come with me to explore them together. When we hear the word Kashi, two things come to our mind. One is the Kashi Vishwanath temple, and then we have Ma Ganga, because most of the people come only for the darshan of these two important places. But what people don't know, that there are Shivlings which are more sacred, significant and ancient than even as compared to Kashi Vishwanath temple. What if I told you there is a Shivling which is even predating the existence of Ma Ganga in Kashi? Whenever any Devi Devata came to Kashi, they consecrated a Shivling in their name. When Bhagwan Sri Ram came, he consecrated Rameshwar Mahadev. When Bhagwan Sri Krishna came, he consecrated Krishneshwar Mahadev. In fact, all the Navagrahas also have their respective Shivlings in Kashi, and it is from Kashi where they got their Adhipatya of being a Navagraha. Today we take the darshans of Chandreshwar Mahadev. The story behind this Shivling goes by when Raja Daksh gave curse to Chandradev that his valor or shine would start to diminish and would completely get wiped away. He came to the dharti of Kashi and did intense tapasya of Mahadev, after which Mahadev blessed him that instead of getting wiped away completely, his valor would diminish for the 15 days and then increase for the next 15 days. It was after this that he consecrated this ancient Chandreshwar Mahadev Shivling in Kashi. Remember that this was predating the existence of Ma Ganga, hence to get a perennial source of water for the regular Jala Abhishek, he also consecrated along with it Chandrakoop, which became one of the most fascinating water bodies of Kashi. Today in this video, we'll take the darshans of both these places and tell you in great depth and detail also about them. Come with me. ये जो चंद्रेश्वर हैं जिनके ऊपर चांदी चढ़ी है, ये भी स्वयंभू हैं। इस पूरे प्रांगण के अंदर दो चंद्रेश्वर हैं, एक ये स्वयंभू चंद्रेश्वर है और एक चंद्रेश्वर और हैं जिनकी स्थापना चंद्र भगवान ने की हुई है। चंद्र भगवान को शिव जी इनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ इनकी ये जो स्वयंभू शिवलिंग चंद्रेश्वर हैं, इनकी लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद फिर इन्हीं की प्रेरणा से इन्हीं के नाम से एक शिवलिंग की स्थापना और चंद्र भगवान ने यहाँ की थी। तो जिस वक्त चंद्र भगवान ने इनकी स्थापना की थी उस समय पृथ्वी के ऊपर गंगा जी नहीं थी। तो गंगा जी नहीं थी तो सबसे पहले कोई शिवलिंग की स्थापना तो हो गई। अब उनके पूजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जल। तो जल कहाँ से आएगा? गंगा जी है नहीं, इसलिए चंद्र भगवान ने इसी प्रांगण के अंदर बाहर एक आंगन है, उसके अंदर बीचों बीच मध्य में एक कूप का कुएं का एक निर्माण किया अमृतोद कूप के नाम से। लेकिन चंद्र भगवान ने इस कुएं को बनाया था, इसलिए इसका नाम चंद्रकूप है, चंद्रकूप के नाम से प्रसिद्ध है। कूप में किसी व्यक्ति की छवि नहीं दिखती है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अब 6 माह से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इसके आधार पर लोग निर्णय लेते थे कि वो अपने घर वापस जाएं। अगर छवि दिख रही है तो फिर वो अपने घर परिवार में वापस जाते थे, अपनी माया में अपने जीवन में आनंद लेते थे। अगर उनकी छवि नहीं दिख रही है तो वो कहते थे कि अब मेरे पास ज़्यादा जीवन नहीं है, मैं काशी में ही प्रभु नाम शिव नाम लेते हुए भोलेनाथ के हाथों से मुक्ति पाना चाहता हूँ।
ये इस कूप की विशेषता है। Now this is the most striking aspect of the temple, and what is even more fascinating is the stories which have been made around it. That if your shadow is not visible in the coop, then your life is hardly 6 months away and you will attain to mukti or death. You have to understand that many such stories were cooked up in the ancient time to ensure that people come to these places for darshan. Because the darshans of the coop, the taking or the grahan of the water of the Chandrakoop was much more important than all of these stories. It is said that anyone who takes up the water of the Chandrakoop is blessed with arogya. Anybody who takes the darshan in the Chandrakoop, his confidence increases to a higher level. Such is the massive importance. Just to the right of the Chandrakoop, you see this entire place. This is the most powerful sanctum in the entire temple premises. This is supposed to be the Samadhi Sthali of 7 Koti Siddhas who are present here in Sukshma Swarup. If you sit down here and meditate even for 15 to 20 minutes, you will feel an upsurge of energy in your body. And somebody who is a seasoned sadhak, if he sits here for meditating, he can go in a state of trance very quickly. This is a must visit for you, and make sure to meditate here when you come in your next Kashi Yatra for darshan. यहाँ जिस स्थान से मैं बात कर रहा हूँ ये सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर है, और इन्हीं सिद्धेश्वरी माँ के नाम से ये मोहल्ला भी है। ये सिद्धेश्वरी माँ स्वयंभू हैं और नवदुर्गा में ये 9वीं दुर्गा हैं। स्वयंभू मतलब जो अपने आप से खुद से प्रकट होती हैं, और इनका नाम एक सिद्ध योगिनी भी है। काशी के अंदर सबसे पहले 64 योगिनियाँ आई थी, जिसमें सबसे पहले आने वाली ये सिद्धेश्वरी माता है। ऐसा कहा जाता है कि जब से ये पृथ्वी है तब से ये माता जी यहाँ पर हैं, तो इन्हीं के नाम से ये मोहल्ला भी है। ये स्वयंभू हैं माता जी, और नवदुर्गा के 9वें दिन इनका दर्शन विशेष रूप से होता है। दर्शन तो रोज ही होता है, लेकिन 9वां दिन इनका विशेष दिन है। इसी मंदिर के अंदर एक सामने और माँ का मंदिर है, उनका नाम है मातंगी देवी, माँ मातंगी देवी। माँ मातंगी देवी जैसे ये नवदुर्गा में सिद्धेश्वरी माँ 9वीं दुर्गा है, उसी तरह मातंगी देवी दश महाविद्या में 9वीं महाविद्या है। ये नवदुर्गा में 9वीं दुर्गा और 9वीं महाविद्या दोनों एक आमने सामने होने की वजह से इस स्थान का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक सिद्ध शक्ति पीठ है और ये बहुत पावरफुल प्लेस है। और इसी मंदिर के अंदर एक स्थान और है, जो कुएं के सिर्फ बाएं तरफ आप जाएंगे तो एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर वो स्थान है, वो यहाँ का सबसे पावरफुल स्थान है। उस स्थान के नीचे 7 करोड़ ऐसे लोग जिनको माँ सिद्धेश्वरी की कृपा से 8 सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसे 7 करोड़ लोग वहाँ पर सूक्ष्म शरीर में, माइक्रो फॉर्म में आज भी विद्यमान है। तो उस स्थान पर बैठकर अगर आदमी मेडिटेशन करता है कुएं की तरफ मुँह करके, तो उसमें 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के अंदर अंदर अपने शरीर में एक वाइब्रेशन फीलिंग आएगी, कंपन महसूस होगा। इतना पावरफुल जगह है वो। If you thought that this was all in the temple, then you are wrong. Kamakhya and Kashi are only 2 kshetras in the entire world where we get the darshans of all the Dash Mahavidyas. This temple also houses one of the 10 Mahavidyas and perhaps one of the most powerful of the Mahavidyas in Ma Matangi Devi. She is the 9th Mahavidya present along with the Navadurga in 9th Swarup Ma Siddheshwari Devi, where both of them are facing towards each other, making it one of the most powerful Siddha Shakti Pithas of Varanasi. The blessings of Matangi Devi can ensure great level of oratory skills on a devotee. She represents the throat chakra. She blesses a devotee to reach to higher levels in politics, in education, and her blessings are so incredible that no enemy can even come close to you and touch you. This is one of the most Jagrit sanctums of Varanasi. Take the darshans of the Jagrit Swarup of Ma Matangi Devi and bless your life.
Your darshans of Siddheshwari Devi remains incomplete till the time you come nearby to the Siddheshwar and Vidyeshwar Mahadev temple. Both of these powerful shivlings are present at parallel to each other. Siddheshwar Mahadev, who blesses you with Siddhi, Vidyeshwar Mahadev, who is consecrated by Vidyadhar Rishi, can bless you with Parangat in Vidya, education, knowledge and great level of wisdom. As Bhagwan Kashi Vishwanath himself says in Skanda Puran that one lifetime is not sufficient to take the darshans of all the Shivlings in Kashi. Hence this was a humble attempt to document one of the most ancient temples of Kashi and connect you closer to the Priya Dharti of Mahadev. Do consider checking out to our website for the sevas in Kashi which we are doing. You can click on the thanks button to show your support in this Dharma Karya and ensure that this Kashi Yatra Sankalp continues for long. Har Har Mahadev, Jai Bhairav Baba.